And chapter 5 is about gravitation. And this is very important chapter in regards to CSS, PMS, and an MCQs extensive thing, a theory question you can say, as well as an MCQs. So the chapter starts with Newton's laws of gravitation, the most important thing we study in basic science as well as basic physics. So what is Newton's laws of gravitation? It simply says if there are two objects of mass m1 and m2 at a distance r from each other, then there is a force of attraction by m1 on m2 and by m2 on m1, and that is proportional to m1 m2. It follows inverse scale law. Inverse scale law is a very usual manifestation for special cases like force at a distance, जो कि यहाँ पे है, ये force distance पे लग रहा है, और जब आप इन्हें combine करेंगे, so that will be Newton's gravitational law. F is equal to gm1 m2 over r square, and g is the gravitational constant whose value is 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kilogram square. So what does this tells us? That for if there are two masses having a distance r, तो उसमें जो gravitational force है हर ऑब्जेक्ट पे जिसका मास केजी में है और डिस्टेंस मीटर्स में है, तो वो उस पर 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन फोर्स लगेगी, जो कि चेंज हो जाएगी डिपेंड अपॉन मास एंड डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस. Okay, so if an object is moving in a way that its force is equal to weight, the force which is acting on object is its weight. For example, the object is going down, the force only force acting on its weight. इसमें अगर आप पुट करें एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्केयर. एम वन की जगह मैंने स्मॉल एम ले लिया है. कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के अगेंस्ट मूव कर रहा है, या वी हैव सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कुछ भी हो सकता है, प्लेनेट है, और जिसके अगेंस्ट कर रहा है, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है, दैट इज कैपिटल एम. तो ये इससे कट जाए. सो जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्केयर. आर भी कैपिटल ले लेते हैं. So this is gravitational acceleration on Earth's surface for a planet of, or maybe an artificial satellite of mass m. तो इसमें अगर आप वैल्यू दर्ज करें, यू हैव जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 11. mass you should remember it, 6 into 10 to the power of 24 kg. r is 6.4 into 10 to the power of 6 meter, or in easier terms 6400 kilometer. तो यहाँ से अगर आप g की वैल्यू निकालें, we know it comes out to be roughly 9.8 meter per second square. Okay, let's move to the second page of this whiteboard which you are seeing there. Okay, the question is how you relate gravitational acceleration of Earth with that of Moon. How you can compare it? We all know the mass of Moon is less than that of mass of
Earth. So G is equal to GM over R square. So let's put this for Earth. For Moon it will be GM M over R square M. और इसमें आपको नजर आ रहा है कि G constant है, just take a ratio. So when you take a ratio, Gm over R is square over Gm M over R M square. This is small, not a small g, but capital G. So this will cancel each other. Mass of Earth and mass over Moon, these are the constants. And then radius of Moon to radius of Earth, sort of a constant, but it can vary depend upon if you're considering some sort of height distance, then it will be R plus H. Height will be added to that thing. So इसमें अगर आप वैल्यू दर्ज करें, the ratio comes out to be GE over GM is equal to 6. And this is basically what we suppose, that the mass of Earth is basically 100 times, almost 100 times as that of the mass of Moon. तो यहाँ पे आप m की जगह 100 लिख सकते हैं रेशो, क्योंकि उससे 100 गुना ज्यादा है, और जो अर्थ का रेडियस है वो मून के रेडियस से 4 गुना ज्यादा है. सो इट विल बी बेसिकली आर एम ओवर 4 RM. तो इट विल बी 100 ओवर 16 विच विल बी राउंड अबाउट 6. ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं, सो इक्विवेलेंट लगा लेते हैं. सो mass of earth is 100 times as that of earth, and radius of earth is 4 times as that of moon. So you have gravitational acceleration of earth as equal to 6 times as the gravitational acceleration on moon, which will make it, अगर आप उसको 9.8 लें तो उसका छठा हिस्सा जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पे होगा. एंड इज अ वेरी फेमस कि अगर आप अपना वेट मालूम करें मून पे जाके, तो आपका जो वेट है वो अभी के वेट से 6 गुना कम हो जाएगा. सो इफ यू वे 120 देन यू विल बी लाइक 20. सो यू आर नॉट fat, but you are on a wrong planet, or wrong, if you go to moon then you will be way much less. So this is basically a comparison. Now I'm moving to page 3 of this whiteboard. Okay, so let's suppose this is an earth, this is center. I go from the center of earth to the surface of earth. We all live on the surface of earth where humans are, and then we go to up. जैसा हम भेजते हैं सैटेलाइट्स को, लेट्स सपोज यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये हमारी स्पेस है. सो देखें, एक तो हम अर्थ की सरफेस से आउटर स्पेस पे जा रहे हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एल्टीट्यूड. और एक हम अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं डेप्थ. और जी दोनों के लिए डिफरेंट बिहेव करती है. जी वेरीज डिफरेंटली. व्हाट डज इट मीन? कि जब आप डेप्थ सेंटर से अर्थ की सरफेस पे आएंगे तो आप जी किसी और तरह आपके लिए बिहेव करेगी. यू विल सी अ डिफरेंट फिनोमिना विद हाइट विद डिस्टेंस. लेकिन जब आप उस की सरफेस से स्पेस में जाएंगे, एल्टीट्यूड में जाएंगे, तो दैट विल बी अ टोटली डिफरेंट स्टोरी. सो उसके लिए जो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो किस तरह रिलेट करता है. सो फर्स्ट हम केस लेते हैं सिंपल जो हम यूजुअली लेते हैं हाइट के साथ, जिसमें हम कहते हैं कि आप
जिस तरह स्पेस में ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो कम होगी। माउंटेन किसी भी ले लें, K2 पे, माउंट एवरेस्ट पे, और सन और सी की जो लेवल है उसके मुकाबले में देयर इज सम डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ जी, माइनर बट देयर इज। सो फॉर एग्जांपल, again this is g is equal to gm over r, and this is value on earth's surface, बिल्कुल at this point. Let me color it in a different way, at this place. And we are to see what happen if we go to this point. So इसको आप height को h कह दें। This is at height h, this is for our surface। अब आप उनकी रेशियो ले लें सिंपली, just like what we did previously। So g for height over g, which is for the surface, gm over r plus h square divided by gm over r square। So gm and gm will be cancel out। इसको आप क्रॉस करेंगे, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। So this is a simpler version of what we were dealing। अभी तक इसमें कोई भी हमें पता नहीं लग रहा कि वो बढ़ रही है कम हो रही है। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है कि आप इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें से r कॉमन ले लें, ताकि ऊपर वाले r से हम कैंसिल कर दें, और हम इसकी कोई सिंप्लीफाइड वर्जन ढूंढने की कोशिश करें। ये से कट गया और ये ऊपर जाके -2 हो गया। अब क्योंकि इनका फासला बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बट बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम के मुताबिक आप इसको सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी पावर है आपको ऐसा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये भी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ g एट हाइट h विद रिस्पेक्ट टू g एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपकी हाइट पे जो g है वो कम हो रही है ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। सो g एट हाइट विल बी लेस देन द g एट सरफेस, और ये सारा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा होगा। और वो किस तरह कम होगी, वो 2h, जितना आप हाइट ज्यादा कवर करेंगे उसका डबल divided by the radius of earth, and then that whole term will be subtracted from 1, and then that will be gh। Okay, just take one example. If you take r is equal to 2h and r is equal to h, okay, I'm moving to next whiteboard page, which is page 4। Now we will consider the second case. What is the value of g at the center, and how g will vary if we go from center of earth to सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हुए हमने स्टडी कर लिया कि that will be inverse relation, i.e. if value of height increase, the gravitational acceleration will decrease। Now from center of earth, again the same relation, g is equal to gm over r square। Okay, in the center what we have, the core, and the core is made up of quite a number of stuff। और इस सारे के दौरान जो मैथ है वो कांस्टेंट नहीं रहता, यानी एक तो आर वेरी कर रहा है, मैथ भी वेरी कर रहा है,
जिस जिस तरह आप जमीन के मरकज की तरफ जाएंगे या जमीन के मरकज से ऊपर जाएंगे, मैथ चेंज होता रहेगा और आर भी चेंज हो रहा है। सो हम दोनों को दो वेरिएबल्स के लिहाज से सॉल्व नहीं कर सकते। सो वी नीड टू रिप्लेस दिस मैथ विद समथिंग एल्स जो कि कांस्टेंट रहती है, और वो है डेंसिटी। और हमें पता है मैथ इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल होता है मैथ इनटू वॉल्यूम। सो आप इसमें रिप्लेस कर देंगे मैथ को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम आपको पता है स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और इस r को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके साथ कैंसिल करके। सो यू हैव g इज इक्वल टू 4/3 g रो, 4/3 पाई g rho r e, फिर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप देख सकते हैं कि इधर g जो है वो r e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पिछला केस रिकॉल करें, लेट मी गो टू द पेज 3, तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Here you can see it is inversely proportional, that is inversely proportional। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब हम डेंसिटी कांस्टेंट के लिहाज से ट्रीट करते हैं। और डेंसिटी कांस्टेंट से मुराद है कि आप अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हैं। बाकी इसमें भी आप इसका रिलेशन बना सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा। तो जस्ट टू गेट दैट, हम अर्थ का कोई सेंटर पे कोई डिस्टेंस लेते हैं जिसका, फॉर एग्जांपल ये हमारा टोटल रेडियस आर है, लेकिन ये डिस्टेंस एक्स है, सिर्फ हम एक्स पोजीशन पे लेना चाह रहे हैं। तो एक्स पोजीशन पे आपका जो जी है, ऊपर वाले फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया, 4 पाई/3 g रो, और रेडियस को आप उस एक्स में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये उसके प्रोपोर्शनल है, तो जितनी कमी होगी उस पर भी उतना इफेक्ट होगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया, इसमें से आप कांस्टेंट ले लें, r e 4 पाई/3 g रो 1 - x/r e। So it will be the ratio of distance to this thing। अब ये क्या है, 4 ये बेसिकली अभी हमने ड्राइव किया, दिस इज दिस थिंग। सो जी एक्स इज g 1 - x/r e, यानी जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आपकी एक्स पोजीशन पे वेरी करेगी लाइक दिस। और ये क्या शो कर रहा है, ये बढ़ेगी कि जी एक्स इज ग्रेटर देन जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्स फैक्टर है, ये जब आर ई से डिवाइड होगा तो यू विल गेट अ वेरी स्मॉल आंसर। जब उसको 1 से माइनस करेंगे तो यू विल हैव अ लार्जर वैल्यू एट दिस साइड। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसमें फर्स्ट चीज़ ये कि जिस तरह आप अर्थ की सेंटर से ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन और सरफेस से जब ऊपर जाएंगे तो वो कम होगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो अर्थ के सेंटर पे मतलब है एक्स की वैल्यू 0, तो इसमें 0 दर्ज करें। सॉरी, अर्थ के सेंटर से मुराद है कि आप बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। सॉरी, ये हम इट्स फ्रॉम अप साइड टू डाउन साइड, तो अप साइड से डाउन साइड से मुराद आर है। तो एक्स इज इक्वल टू आर ई, और आर ई ओवर आर ई कट जाएगा तो 1 - 1 0। सो अर्थ एट द सेंटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। ये बेसिकली हम ऊपर से नीचे की तरफ ले रहे हैं कि डेप्थ में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये भी कम होगी। तो इसको अगर हम, मैं नेक्स्ट पे आके समराइज कर दूं आपको, विच इज पेज 5। दिस इज अर्थ, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, this is center of earth। So at the center of earth, gravitational acceleration is 0। When you move from center of earth to the surface of earth, gravitational acceleration increases, or other way around, when you move from surface of earth
towards the center of Earth, the gravitational acceleration decreases. And then if you move from surface of Earth to up, the gravitational acceleration decrease. So basically अगर surface of Earth से ऊपर जाए या नीचे जाए तो gravitational acceleration कम होगी. इस चीज को अगर हम just for the time being खत्म करते हैं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं आपकी gravitational acceleration कम होगी. सो इसी वजह से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इससे ऊपर 9.8 से कम होगी, लेट्स फॉर 9.7 मीटर पर सेकंड. So this is a quick summary of variation of g with altitude and depth. Okay, we talked about the density of Earth. So what if someone asks, I'm moving to page 6, okay, what is the density of Earth? So how you can determine the density of Earth? For that you need volume, that is 4 over 3 pi r cube. 4 over 3 pi r is 6.4 into 10 the power of 6. तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम निकल आएगा, mass over volume, and mass is 6 into 10 the power 24. तो इसको आप इसमें दर्ज करेंगे. So you will get the density of Earth, which is 5.5. You can solve it yourself. 10 the power of 3 kilogram meter. So it is a very short, simple, short question. And there is a comparison as well. The density of water is 10 to the power of 3, 1000 kilogram per meter cube. So density of water and density of Earth is compared, that it is 5.5 times more than that of water.